My Telegram ID, well, you can search for Kunal Agarwal, double KUNAL. Or, like if you're a member, but you're not a member, I think. Why can't you join the channel? Because, like in many of my videos, in the description, I've shared my Telegram ID. You can search for Kunal Agarwal and there's double K in Kunal. Double K. Okay? Just like on this channel's name. So double KUNAL space Agarwal. AGARWAL. And in many of my videos, in the description of the video, I've shared the details of my Telegram channel as well. So try to find out. Okay? You will be able to see that. Hello, Gangadhar. सुना है कोई बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है इंग्लैंड में गौतम गंभीर और ग्राउंड्समैन के बीच. ये सीरीज़ मतलब मुझे लग रहा है बीजीटी से भी ज़्यादा इंटेंस रही है, सच बताऊँ तो. बीजीटी भी बहुत इंटेंस थी. बहुत मज़ा आया सीरियसली. मतलब he's always savage. I mean, both of them, Gautam Gambhir as well as Virat Kohli. Just imagine had Virat Kohli been there and Ben Stokes would have tried that handshaking gesture. He would have ripped him off. Virat Kohli would have ripped him apart. Ravindra Jadeja was a very easy, soft target for Ben Stokes. Maybe, had Virat Kohli been there, Ben Stokes would have not even tried. Even if Virat Kohli would have been sitting in the pavilion, even then Ben Stokes wouldn't have tried that fake handshaking gesture. It's so childish what Ben Stokes has done. I mean, the years of hard work and fabulous performance that garnered him all that respect, he just lost it, in a matter of a few minutes. A player is batting on 89 and uh, you know, try to call the match off. It's so shameful. A player is just 11 runs short of his 100 and you're trying to call the match off. This was just not done, Ben Stokes. You're trying to justify um, you know, the Hindi word that is always, kind of spoken along with your name. There's a Hindi word, a Hindi slang that is associated with your name. That gets associated with your name quite often, just for you, for the purpose of humor. So you're trying to live up to that. Actually, you're trying to justify that. Ben Stokes. It was nothing but frustration, Kevin. And to be very frank, like I'm also wondering how did this even happen? 0 for 2, okay? 5 sessions are left on the fourth and fifth day of the match. Out of those 5 sessions, 4 sessions go wicketless. I mean, this was nothing but superpower. I mean, it was kind of some superpower has possessed the Indian team. And you are not able to get Ravindra Jadeja and Washington Sundar out. Washington Sundar, is kind of a night watchman actually. Yes, he has done wonders with the bat. But if you're not able to get
Ravindra Jadeja and Washington Sundar out in 2 sessions. I mean, I'm literally just thinking that some superpower did possess the Indian team on that day. Sorry for that, folks. I just had to change. I had to switch to a different room. So, thank you, Kavin, for that. Test cricket is the real test, without a doubt. And these English, they failed at that test. This final at Oval, you know, I'm very sure that if it won't be one sided, then we are in for a cracker of a contest. Let's just hope that it won't be one sided. You know, I think it will be even more intense than the third test match. There's so much going on, behind the scenes. We are in, for a blockbuster. A blockbuster is on the cards, for sure. लड़ते रहते हैं, I agree, and maybe this can be controlled to some extent, but at times he's right also. Let's not forget that. होना नहीं चाहिए, देखो मतलब the thing is,
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना चाहिए कि नहीं, ये एक दूसरा टॉपिक है। और ये वाला मैच पर्टिकुलरली होना चाहिए कि नहीं, ये दूसरा टॉपिक है। अब अब तुम मुझे बताओ, अगर ये वाला मैच होगा तो भाई वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में क्यों नहीं हुआ मैच? सिंपल सी बात है ना। WCL का मैच क्यों नहीं हुआ? आप पूरे इंडिया को आपस में आपने लड़ा दिया, ठीक है। कोई पाकिस्तान का नाम भी ले ले तो लोग कहते थे पाकिस्तान चले जाओ। इनफैक्ट इतना खतरनाक माहौल कि कब मॉब लिंचिंग हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लोग घर में घुस के मारा है लोगों ने यार, पुलवामा के वक्त। किसी ने अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया हो तो पाकिस्तान के फेवर में या चाइना के फेवर में, घर में घुस के लोगों ने मारा है। कितने सारे वीडियोस अवेलेबल है सोशल मीडिया पर। ये है लेवल ऑफ इनटॉलरेंस इन आवर कंट्री। तो आप एक तरफ सबको लड़ा रहे हो, लोगों को अपने घरों में पिटवा रहे हो, मॉब लिंचिंग करवा रहे हो, और दूसरी तरफ क्योंकि आपको अरबों डॉलर ठूंसने हैं, अपने जेब में डालने हैं, इसलिए आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच करवाओगे। क्या समझ रखा है अपनी जनता को? सीरियसली, जनता को क्या समझ रखा है सरकार ने और BCCI ने, ICC ने? कुछ ज़रा सा कुछ बोल दे तो पाकिस्तान चले जाओ। जिस तरह से ये मूर्ख बना रहे हैं जनता को, और जिस तरह से ये लोग जनता को मूर्ख समझते हैं, प्लीज़ जनता मत बनो मूर्ख यार। मतलब क्या हो गया यार इस जनरेशन को। और सबसे ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगता है कि यार ये यंग जनरेशन इतनी गलीबल है, इतनी बेवकूफ़ है, मतलब इतनी ईजिली इनको बहकाया जा सकता है, इतना ईजिली कुछ भी इनसे करवाया जा सकता है। नहीं, पैसा इंडिया में आता या जहाँ जाता वो बात नहीं है। अगर आप पूरे देश को लड़ा रहे हो आपस में, अगर आप मॉब लिंचिंग जैसा माहौल क्रिएट कर दे रहे हो कि कोई पाकिस्तान का जिक्र करने से भी डर रहे हैं, विच कुड बी फेयर टू सम एक्सटेंट, तो उसके बाद आपकी ज़रूरत कैसे हो रही है कि आप ये मैचेस शेड्यूल भी कर रहे हो? उसके बाद ये सारे मैचेस शेड्यूल करने की भी ज़रूरत आपकी कैसे हो रही है? ठीक है। क्या कहूँ, मतलब ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सच बताऊँ तो अप टू द मार्क तो एक भी नहीं है। ठीक है कि कंपैरिजन्स किए जा सकते हैं, ओपिनियंस आर सब्जेक्टिव, ठीक है। someone might be anti BJP, someone might be pro BJP, someone might be anti Congress, someone might be pro Congress, और ये सारी ओपिनियन सब्जेक्टिव है, ठीक है। उसमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि हाँ, ये ओपिनियंस सब्जेक्टिव होती हैं, पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल बिलीव्स, पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस सब्जेक्टिव होते हैं, उस दिन यू नो ये सारा भसड़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बेवकूफ़ मत बनो यार, किसी भी सरकार से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनो कि कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके तुमको, कोई भी पॉलिटिशियन बेवकूफ़ बना दे और तुम बन जाओ। नॉट डन। हो सकता है बीजेपी का एजेंडा वो हो, बट सभी का कोई ना कोई एजेंडा होता है। और अ, आरोप लगते हैं एंटी इस्लाम होने के, और तो कुछ पार्टीज़ हैं जिन पे एंटी हिंदू होने के भी आरोप लगते हैं। तो आई मीन, जैसे मैंने कहा ना, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। द ओपिनियंस विल बी वेरी सब्जेक्टिव फॉर दिस टॉपिक।
करुण नायर यार. Okay, I'll try यार. But why do you want to know about him? There are other interesting topics also. Karun Nair, okay, let me check what went wrong. I didn't even check it as of now. But the thing is that it could be our thought that you know Karun Nair was a complete failure. But if you look carefully, he played only three tests, okay? And on the basis of those three tests, if you want me to check how this year was for Karun Nair, see, this is not sufficient. It would be analyzing with it's kind of analyzing with insufficient data. Okay, based on his performance in three tests, if you want me to check how is 2025 for him, so that's you know that won't be a proper analogy. बाउंसिंग द किंग. नहीं भाई साहब, अब इन लोगों पे मुझे वीडियो नहीं बनाना. नहीं तो पता चला कि मेरे चैनल पे ही कोई यू नो के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया किसी ने. बट आई मीन इट्स जस्ट इरेलीवेंट. ये टीम ख़त्म है, ठीक है. ये इधर उधर इक्का दुक्का भले ही जीत जा रही हो, बट कभी बाई फ्लूक ये कोई आईसीसी ट्रॉफी भी जीत जाए, बट कभी भी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला जो डोमिनेशन हम पूरे विश्व ने देखा है, इंडिया को डोमिनेट करते हुए और या फिर ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करते हुए, वैसा ये लोग कभी नहीं कर पाएंगे. सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट. वैभव सूर्या, अभी रुक जाओ यार. अभी T20 वर्ल्ड कप है, फिर अभी क्या कहते हैं ये सीरीज चल रही है. इट वुड बी टू अर्ली टू टॉक अबाउट वैभव सूर्यवंशी. सो जस्ट bear with me. चलो फिर लेट्स कीप दिस शॉर्ट. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस वीडियो में. और इस वीडियो के ज़रिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद. आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में बहुत जल्द, या फिर अगले लाइव सेशन में मे बी. तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, और अपने परिवार का भी, अपने पड़ोसियों का भी, जो भी आपके आसपास आजू बाजू हैं सबका बहुत ख्याल रखें. खुद का भी बहुत ख्याल रखें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, जय माता दी.